Heidi.
Hi team. Am I गुड इवनिंग सर। Good evening यार. Good evening. कैसे हो सब? सर ठीक है, आप कैसे गुड हैं? इवनिंग सर। ठीक है सर। मैं भी बढ़िया हूँ यार. तो काफी आज आई थिंक लाइक काफी टाइम बाद हमारी क्लास हुई है. सर बहुत मिस कर रहे थे आपको। यस सर। यस. एक्चुअली मैं पिछले वीक मेरे दोस्त की शादी थी, तो मैं वहां गया था. फिर मैं होम टाउन आया, तो थोड़ा मैं बिजी था. ओके. सो गाइस, यस वी कैन स्टार्ट नाउ. एंड मैं तो भूल भी गया हूँ कि हम कहाँ थे, बट ठीक है, देख लेंगे. ओके. सर बैक एंड पार्ट पर थे हम ई कॉमर्स वेबसाइट पर। ओके. ओके. स्क्रीन विजिबल नहीं होगा तो आप लोग बताना. विजिबल तो होगा. यस यस सर, सर। विजिबल है। छोटा दिख तो नहीं रहा ना? सही दिख रहा है स्क्रीन साइज? यस सर। ओके, ठीक है. पहले से छोटा है ना? हाँ, ये मैं दूसरे लैपटॉप से इसलिए. हाँ, ठीक है. सर एक्चुअली आई वांट टू शेयर समथिंग। या सर एक्चुअली सर मैंने ऐसे ही एक इंटरव्यू दिया था एंड ओके. आई एम सेलेक्टेड फॉर फ्रंट एंड डेवलपर। ओह नाइस यार, कॉन्ग्रेचुलेशन. वाह. अब सर आईबीएम कंपनी में मैंने सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी कंपनी में मुझे फ्रंट एंड के लिए मैं हायर हो गई सर। दैट्स ग्रेट. ग्रेट न्यूज़. आईबीएम में कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टार्टिंग पैकेज वो 3.5 लाख है नाइस. एज अ फ्रेशर ओके. एंड वर्क फ्रॉम होम। ओह नाइस यार. दैट्स ऑसम. थैंक यू सर। और कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तुम्हें खुद थैंक से यू। ट्राई किया था या लाइक? नहीं सर मैंने खुद से किया है। ओके. तो इंटरव्यू कैसा गया? मतलब ऑब्वियसली सर अच्छा गया होगा तभी यह सर सिलेक्टेड हो. 3 राउंड से उसमें हाँ. फर्स्ट था ऐसे बेसिक राउंड था, इसमें मुझसे कुछ पूछा गया। सेकंड कोडिंग में था। कोडिंग में फुल जावास्क्रिप्ट से मेरे थे सारे क्वेश्चंस थे, ओके. जिसमें मैंने एक सॉल्व नहीं कर पाया, बाकी सारे सॉल्व हो गए थे। नाइस. एंड जो थर्ड राउंड होता है एचआर राउंड, वो मैंने क्लियर कर दिया था। तो जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस थे, यस सर। तो प्रोबेबली तुम जावास्क्रिप्ट था, इसको एक रिएक्ट का था, बेसिक क्वेश्चंस था वो आई यार थिंक। तुम्हारे लिए वो रिएक्ट का जो क्वेश्चन होगा वो तुम्हारे लिए जस्ट कप ऑफ टी होगा. यस सर, वो बहुत बहुत मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था। यस. नाइस है. नाइस. थैंक ग्रेट. यू सो मच सर। बट ज्वाइनिंग सर 1 मंथ बाद है, ऑफर लेटर मिल गया है। ऑफर लेटर ज्वाइन। मिल गया, कोई बात नहीं. कभी भी आईबीएम में ज्वाइन कर रहे हो और दैट्स ग्रेट न्यूज. और यस, अपना बेस्ट देना है, कहीं भी काम करना है. और देखो ये लाइफ में तुम्हारे लिए कितना टर्निंग पॉइंट होगा कि 6 महीने पहले वेयर यू आर और 6 महीने बाद आप एक एमएनसी कंपनी में अच्छे प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हो. और यहाँ से तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी. और इवन हर चीज चेंज हो जाएंगी जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे. तो ये एक मतलब मेरे लिए, एंड आई एम सर फीलिंग प्राउड करेंटली. ये सारा क्रेडिट सर मैं आपको देना चाहती हूँ। बिकॉज ऑफ यू सर, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि आपने कितना अच्छा सिखाया है सर कि हम लोग अच्छे से इंटरव्यू दे पाए। सो यस. थैंक यू सो मच सर। नाइस सर. नाइस. ग्रेट. सर हमने भी एक स्टार्टअप ज्वाइन किया है बढ़िया यार. ये 15 दिन में अभी। क्या क्या कर उस लिया पे तुम लोग यार? मैं अभी कंटिन्यू ज्वाइनिंग हो गई है, मैं कंटिन्यू वहाँ पे जा रहा हूँ। तो जो अपने कॉलेज वाले जो आप जो कीड़ा वाले ने टास्क दे रखे हैं वो अब तक मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। तो अगर तुम ज्वाइन कर चुके हो, तुम्हें अच्छा वहाँ तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे हिसाब से काम सही काम है और तुम्हें अपना फ्यूचर वहाँ दिख रहा है कि तुम लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, तो इट्स ग्रेट यार. सीरियसली बहुत अच्छी बात है यार अगर तुम ज्वाइन कर लियो. तो मेरा यही मानना भी है कि हर जो भी बंदे हैं, जो भी बच्चे, जो भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन की भैया क्या चल रहा है. फर्स्ट डू यस विथ सर। योर सेल्फ. बी कॉन्फिडेंट. मेहनत करो. अगर मैं ये स्टार्टिंग में ही बोला था, जो मेरे साथ एक पैरेलल में चल रहा है, और हिमांशी भी उसमें से एक थी, भवेश भी है, और भी बहुत लोग हैं, प्रतीक है. तो देयर लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत पैरेलली इन चीजों को लेके मैनेज कर रहे हैं. तो डेफिनेटली तुम प्लेस्ड होगे, सारे प्लेस्ड होगे. और लाइफ बहुत सामने से तुम्हें टर्न होती हुई दिखेगी. क्योंकि आईटी के देखो, आईबीएम में जाना या देखो, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि आप आईबीएम में जा रहे हो या आप किसी स्टार्टअप में जा रहे हो. मेरे लिए ये मैटर करता है ना कि आप जिस प्रोफाइल पे जा रहे हो, इस प्रोफाइल ये एक ब्राइट प्रोफाइल है. यस सर। 98% of the web is dependent on JavaScript only. तो अब JavaScript में ना
अब ये हिमांशी को ले लो, भावेश ले लो, और भी जो लोग काम मेहनत कर रहे हैं, तो आगे भी यही ऐसे ही होता चलेगा कि तुम्हारे पास फ्रेमवर्क्स अलग अलग आएंगे। योर कोर नॉलेज अगर आपका स्ट्रांग है, आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और डेवलपर्स, अभी तुम जाके देखना कि वे ऑफ वर्किंग क्या होता है। मैंने मार्केटिंग के बंदों को भी बहुत क्लोजली देखा है, मैंने बिजनेस एनालिटिक्स को देखा है बहुत क्लोजली, और मैंने आईटी के लोगों को भी देखा है बहुत क्लोजली, और इवन काम भी कर रहा हूँ। तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। आपके पास वही काम होगा जो आपको आता होगा, और इवन वो पता है कि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, कि वो कन्विंस नहीं करना है किसी मार्केटिंग के बंदों के जैसा, या बिजनेस लेके नहीं आना है। आपको आपको अपने आप पे भरोसा, आप काम करोगे, चिल मोड में काम करोगे, आप छुट्टी लोगे, मेहनत करोगे, एंजॉय भी करोगे अपने लाइफ को। तो होपफुली आप लोग सबके लिए ये बेस्ट होगा आगे भी, और ऐसे ही गुड न्यूज देते रहा करो। और थैंक हिमांशी, यू सो मच सर। यस सर। अवेश, अगर आप लोगों ने ज्वाइन करा है तो डेफिनेटली एक इजी मिठाई मेरे घर पे भिजवा देना सब। यस सर, सर अभी कंपनी तो है ना सभी नोएडा में ही है सर, तो प्लीज एड्रेस दे दीजिएगा, हम खुद आके आपको मिठाई देंगे। हाँ बढ़िया यार। सर हमने जयपुर में ही हुआ है, हमारा कोई स्टार्टअप है हाँ, उसके अंदर फ्रंट हेड के, और उन्होंने अभी मेरे को 25,000 पर मंथ पे कर रहे हैं, और आफ्टर 3 मंथ्स वो 45 हो जाएगा। नाइस नाइस, ग्रेट ग्रेट न्यूज। और अब बिलीव हो रहा है ना यार, जो मैं बोलता था कि भैया मेहनत कर लो, अच्छा मिल जाएगा, सर एक वो अब बात मुझे लग रहा मतलब है। आपने जो पहले कहा था ना कि इसी पर डिपेंड मत रहो, एक ही पर कि ई कीड़ा पर ही डिपेंड रहना है, अपने खुद से करो, तो उसी टाइम हमने स्टार्ट कर दिया था, देन रिजल्ट नाइस, आज मिल गया सर। और देखो यार, वही होता है कि कॉन्फिडेंट बहुत बच्चे ना भागते इंटरव्यू से, जस्ट बिकॉज ऑफ है ना, उन्हें क्या लगता है ना कि मुझे और प्रिपरेशन करने की जरूरत है, थोड़ा और मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा ना तो मैं करूंगा। और बहुत लोग वो एग्जीक्यूट कर देते हैं कि भैया देखा जाएगा, इंटरव्यू में बैठो देखा जाएगा क्या होना है। सर डर तो और बहुत है इंटरव्यू के लिए, और मैं सर यहाँ आगरा से दिल्ली गई हुई थी इंटरव्यू के लिए, मेरे लिए थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था, तो थोड़ा देखो डर ऐसे भी था सीखो मेरे यार, अंदर। और इसके बच्चे भी है, एक छोटा सा बच्चा भी है, और यस उसके सर। बाद भी सारी चीजें मैनेज कर रही है। दैट्स ग्रेट यार, सीरियसली। थैंक यू सो मच सर। ओके, गिव मी अ सेकंड। यस सर। स्क्रीन इज विजिबल, है ना?
Yes, sir. Okay. So what I'm going to do here? Yeah. Okay, my actually I have tested it to check where the project is cloned or not. So our backend server is uh, connected properly. I'm going to start my backend server again. So npm run what server. So yes, अब क्या हम करेंगे ना कि हम यहाँ पे अपने टर्मिनल पे अपने सर्वर को चला रहे होंगे और कोड हम अपने हम वहाँ पे लिख रहे होंगे, ठीक है. तो yes, it is connected to our MongoDB now, and now I'm going to go inside my CD front end. Okay, my terminal is visible. ये हाँ, लेकिन बहुत बहुत स्मॉल है सर, मतलब Yes, sir. Small. दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. Now it is visible. Yes, sir. Yes sir. Okay. So and I'm inside my front end. So npm start. So yes, we have the localhost 3001, and yes, this is our front end UI part. We have four different navigation things. First is user, second is category, third is products, and fourth is our order. So basically what we are going to do here, we are going to integrate the users, a category, products, and order if it is required. So yes, so I'm going to open my notepad. Okay. So yes. I'm going to create. ठीक है. It is visible. Yes sir. Yes, sir. Okay. So basically, what we have. Give me a second. Let me check. So yes, we have in our backend. We have. I'm going to zoom it out as well. Is it visible? Nice. So inside our backend, we have a category controller and a product controller and a user controller. So inside your product controller, we have a create product, how to create a product API. We have a get all products API. We have a get product by ID. We have a update a single product. So these are the four different controllers which we have. Apart from that, in user, which API we have? We have a register and a login API. And in a category controller, what we have? We have a create category and get all categories, right? Okay. So today what we are going to do, we are going to integrate these APIs inside your front-end application. So this is our things which we have to do. So I'm going inside my front-end directory, and here we have a pages, and we have an admin dashboard, and yes, admin dashboard is this yes, this is an admin dashboard. Here we have a add a user modal, where we can add a user from the from where from our modal. So let's start. So basically what we are going to do, I'm going inside my terminal, and here we have a add a user model. So when I click on it, we have enter your name, email, enter your password, and role. Okay. So yes, we can integrate from here. Apart from that, we have a products. So I'm going to make a route for the product. So basically, I'm going to integrate this API first, add a user API. So you can see this API when you add the user, then the data should be displayed on your UI without refreshing your web page. So that is the power of what React. What React do when you hit an API, and if the data is coming from the backend,
then it directly populates in our front end without what? Without refreshing your web page. Okay, so let me check how can we do that. So basically, I'm going to make a logic. And what are the logic? So I'm going inside my components directory. And here we have a dialog box where we have a dialog things. Yes. So what we have to do here, we have to like integrate the API. So before integrating an API, you have to handle this form data. Without handling this form data, it can't be possible to provide a payload to your API. क्या विदाउट पेलोड आप एपीआई को हिट कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ पोस्ट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लाइक integrate an API, and firstly we have to manage the what their required payload. So uh, yes, so here what I'm going to do, I'm going to import a use state. So yes, this is our customized dialects and this is our return statement. So देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ भी रिटर्न है यहाँ भी रिटर्न है. पहला मेन कंपोनेंट ढूंढना होता है. तो दिस इज योर फर्स्ट मेन कंपोनेंट. इसके अंदर से ये सारी चीजें कॉल हो रही होंगी. अगर बूटस्ट्रैप डायलेक्ट टाइटल है तो ये आपकी JSX से कहीं ना कहीं से कॉल हो रही होंगी. तो हियर ये यहाँ से कॉल हो रही है, ये कंपोनेंट यहाँ से कॉल हो रहा है. तो ये कंपोनेंट इसने यूज कर लिया है इसके अंदर. मतलब ये कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट इज समथिंग सिंपल फंक्शन. आप उसको कंपोनेंट बोलो या फंक्शन बोलो. तो इस फंक्शन को या इस कंपोनेंट को हमने इस मेन कंपोनेंट के अंदर यूज करा है. एंड हियर द मेन कंपोनेंट इज व्हाट? कस्टम डायलॉग्स. सो आई एम गोइंग टू मैनेज द स्टेट. तो फॉर्म डेटा एंड व्हाट बताओ? सेट फॉर्म डेटा. इट इज कमिंग फ्रॉम वेयर? बताओ. यूज स्टेट. क्यों स्टेट बनाया है समझ में आ रहा है ना? बिकॉज यस सर. थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं? सॉरी, थोड़ा सा जूम हो सकता है क्या? yes, yeah, it is visible. Yes. Thank you. Yeah, so inside use state what we have a simple empty object. So yes, and now I'm going to call the handle change function which handles this what? This data. So okay, and now this handle change okay, I'm going to quick fix it. Yes, and now what I have to do here, I have to make a what? Function which handles your form data. So const handle change handle change, and this is an arrow function. So so I'm going to copy it from any of the component. यही तो हमें करना था क्योंकि हमें यही फॉर्म डेटा हैंडल करना है. तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एम्प्टी स्टेट की जगह ये नेम ईमेल और पासवर्ड और रोल चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, what I have to do here, I am going inside my dialog box component और इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ. ठीक है. अब आप आओगे अगर अपने एडमिन डैशबोर्ड पे, तो हियर व्हाट वी हैव, no, inside our sign up page we have this handle change function. So I'm going to copy it out, and now I'm going to paste it inside your handle change function. So just going to copy it, and yes, it is now okay. And here what we have done here, we have abstracted the name and value property from event.target. So because event.target is an object, so you can destruct the name and value keys from that event.target object. So yes, you have destructed it, and now you are calling this at form data, which is a what? Which is this? Sorry, yeah. So this is basically this state function which updates your required state. So it is set form data, and now as a callback, you take as an argument which is a previous state. And so whatever inside your previous state of that form data state, it is now copied inside this previous state. And now because previous state is an object, so you have spread it out with this triple dot. So you can make a copy of this previous state and just update it, and now you have a name, and name is what? The
something which you have passed inside your input fields. So here, when you type your name, then name should be copied inside this name variable. When you type the email, then name should be what? This email. And what are the required values which is inside your component, like this value. Okay, you haven't passed any value, but it takes that on the behalf of the name, it takes the value property. So that value is now equal to that name, what? This name parameter. So now you have set the form data, and now when whatever you have typing inside your input fields, it is stored inside this form data object. Now it is okay. And now what we are going to do, we are going to use this handle submit, and simply you have to dispatch it. Simply what you have to do, you have to dispatch this. So with handle submit, what it means, yes, this is a handle change, and save changes on click, on close. So on passing that on click, what we have passed on close function. So I am going to use this handle submit. Sorry. Okay, I'm just going to write this handle submit. Yes, and when the save changes button has been clicked, then this function has been triggered. So handle submit has been triggered from this. And now what you have to do, you have to import this action creator and this dispatch from the React Redux. So firstly, I'm going to import what? Import dispatch from where? From React Redux module. And now what you have to import? You have to import this register action creator. This register action creator. Uh, yes. So just give me a second. Yes. Yeah. Yes. And this register from where? From this is inside your uh, actions and user actions. Yes. It is okay. So let me check what is done here. So yes, आप यहाँ लगा सकते हो react.use state. It works. And navigate. So navigate, what it means, whenever this option, whenever this action has been dispatched, it navigates you to the home page. Okay. So now I'm just removing this because this is admin panel. It is not necessary from here to navigate the user to the login page because it is an admin. So I'm going to dispatch simply a register action creator. So let me check what has been done here. Okay. Okay. So Redux dispatch is coming from Redux module, I think probably. Let me check. Redux possibly do not action types. Okay. So okay, basically this is a huge dispatch, right? And it is coming from React Redux itself. So I'm going to use this use dispatch. So what we have to do here, we have to use const dispatch is equals to this use dispatch and call this use dispatch hook. Okay. Okay. So let me check. Yes, everything is okay now. And now what I'm going to do, I'm opening my inspect tab. So this is our network. Okay. Yeah. So just going to add a user. So because Himanshi done a great job. So Himanshi at the rate anything ibm.com. अब ये तुम्हें मिलेगा इस नेम से क्रेडेंशियल मिलेगा तुम्हें. And password is 123456 and role is admin. So yes, let me check. When I click the save changes, yes, one register has been called, and I think it have some issue. Payload is okay and password is empty.
Okay, so I have to check my password. But why not hit in? Okay, so let me check my console browser. And yes, it have some error. Component changing. Okay, no any kind of error. And in network. Okay, let me check my backend server. So if it is a problem, then it gives you some error. Path password is required and password नहीं जा रहा है. So दिख रहा है ना यहाँ backend की error पे? दिख रहा है तुम लोग Yes को? sir. Yes sir. यहाँ पासवर्ड इज रिक्वायर्ड. क्योंकि मैं क्यों चेक कर पाया? बिकॉज मैंने देखा कि भैया कंसोल में तो कोई एरर आ नहीं रहा है. मतलब इट इज नॉट हैंडल्ड ऑन साइड ऑन द फ्रंट एंड साइड, सो इट मस्ट बी हैंडल्ड ऑन द बैक एंड साइड. So but when I go inside my network tab, it gives you nothing as an error. So I have to check my backend console. Okay, so password is required. I have to check it out. What is the issue here? So name, email. Okay, because handle change is not triggered from here. That is the issue. So now it is okay. ठीक है. Okay. Yeah. So let me check. I'm going to hit the API again with this required changes. Payload. Okay. Password must be. Okay, I have to refresh my page. So ठीक है. Hmm. Once at the rate gmail.com. Six admin. Now I'm going to click my save change button. Yes, it is created. You have the required preview, and it means what? You have created a user inside your MongoDB. So I'm going to check my MongoDB. So let me check. Hmm. क्या पासवर्ड था यार? Let me- आई डोंट नो यार, देखना पड़ेगा. मेरे उस लैपटॉप में क्रेडेंशियल सेव है, इसमें सेव नहीं है, तो आई डोंट डू एनीथिंग. ओके, सो यस इट इज डन. You have already created a user because you have the preview and you have a status 201 created. So it means you have created a user. But what you have to do here? In a front end, what you have to manage? You have to win. The user has been saved inside your database. Then this model has been what? Pop out. ये मॉडल को क्या करना है आपको? इसको क्लोज करना होगा, है ना? Yes sir. करना पड़ेगा ना. So what I'm going to do, I'm going to dispatch, not dispatching anything. I'm going to call on close function from here. And what on close do? आपको पता है ना on close क्या करता है? आप देखोगे इसके डायलॉग बॉक्स में, तो यहाँ पे क्या है डायलॉग बॉक्स में? डायलॉग कंटेंट एक्शन. और आपने इस डायलॉग को कहाँ यूज किया है? कंपोनेंट्स यूज किया है. तो आपके पास क्या है इसमें? ऑन क्लोज है ना? ये ऑन क्लोज. और ये ऑन क्लोज क्या करता है? जब ये ट्रिगर होता है तो आपका डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है. यही होता है ना? मतलब आपकी ये जो डायलॉग बॉक्स है, ये जहां से भी कॉल होगा वहां पे जैसे ऑन क्लोज ट्रिगर होगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑन क्लोज हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा. तो यू हैव टू कॉल दिस ऑन क्लोज फंक्शन फ्रॉम द डायलॉग, फ्रॉम दैट बटन हैंडल सबमिट. व्हेन यू कॉल दिस हैंडल सबमिट, you have to you have to close the dialog box as well. So I'm going to use on close. अगर मैं इस prop को कॉल करता हूँ तो कर सकता हूँ क्या यहाँ पे on close को कॉल? लेट मी चेक. on close को मैं एक बार कॉल करता हूँ. सॉरी, on close I don't think it works. Let me check. So
when you just refresh the web page and add a user, test user at the rate test.com, password is 123456 and role is user. So when I click this save things, yes, it works. क्या हो गया? ये वर्क कर रहा है. ऑन क्लोज क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है. दिख रहा है ना तुम लोगों को? मतलब यूजर क्रिएट हो गया तो क्या हो गया? तुम्हारा मॉडल बंद हो गया. It's good. It's nice. So now I'm going to use one snack bar to handle the what? Handle this uh, equi snack bar. So handle the matlab when you hit the API, it gives you some snack bar messages to your screen कि भैया हुआ क्या. अभी तो यूजर को कुछ पता नहीं चल रहा है ना कि क्या हो रहा है. हर यूजर को ये थोड़ी पता होगा कि जाके नेटवर्क रिक्वेस्ट नेटवर्क में चेक करेगा कि भैया यूजर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ. तो आपको क्या देना पड़ेगा? एक मैसेज देना पड़ेगा ना भाई. Yes, sir. O equi snack bar तो नोटिफिक है. Yes, I'm going to install this notice stack in our front end. So yes, so I'm going to open it. It is front end. क्या है? node minus p. ठीक है. तो cd front end है. ls. ठीक है. So I'm going to use NVM. So I'm going to use 14.16.1. NVM is a package which gives you different node versions in your local. So yes, node version is 14.16.1. So now I'm going to install this notice stick package. Okay. It is installed inside your front end. So let me check our package.json. So yes, notice tech has been installed. So I'm going to, through its document what it suggests. So ठीक है. मेरे को क्या करना पड़ेगा? स्नैक बार प्रोवाइडर पहले स्नैक करना पड़ेगा. So I'm going to use this snack bar provider inside my index.js because it is the main component. So just I'm going to wrap this snake bar. So just import it. और मुझे एक भी स्नैक बार यहाँ यूज नहीं करना है, मुझे सिर्फ स्नैक बार यूज करना है. तो मैं क्या करता हूँ, इसको रैप कर देता हूँ अपने ऐप कंपोनेंट को. तो यस, दिस स्नैक बार प्रोवाइडर and I have to copy it and just paste it out. And yes, everything is okay now. Yes, so it is ready. And now what you can do here, give me a second. ठीक है, ऑन क्लिक क्लोज स्नैक बार करने की हमें जरूरत नहीं है ना. ओके, ठीक है. सो लेट मी जस्ट copy it. So where we have this, okay, I'm doing something nesty here. I'm doing something nesty. Why? कुछ समझ में आ रहा है? देखो प्रॉब्लम यहाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है. एक चीज बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकता है. कोई जो मैं जिस लेवल पे मैं सोच पा रहा हूँ उस लेवल पे सोच पा रहे हो? बताओ. सर कोड को कुछ और सॉरी, ऑर्गेनाइज करना. सर कोड को कुछ और ऑप्टिमाइज करना है. हाँ, कुछ ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड चीजें हैं. देखो करना ऐसे भी कर सकते हो. इट्स नॉट, बहुत लोग करते भी हैं, बहुत लोग ये प्रैक्टिस भी फॉलो करते हैं. बट आई मतलब पर्सनली डोंट लाइक दिस कोड बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि प्रॉब्लम इज समथिंग कि जो तुमने डायलॉग बॉक्स बनाया है, अब ये क्या है, यूजर ओरिएंटेड हो चुका है तुम्हारा डायलॉग बॉक्स. क्योंकि तुम अपनी एपीआई को कहाँ हैंडल कर रहे हो? कंपोनेंट पे हैंडल कर रहे हो. तो इससे क्या हुआ कि क्या ये कंपोनेंट को रीयूजेबल बना सकते हो?
Is it possible to make this component reusable with this approach? Yes or no? Yes or no? No, sir. If anyone's say me that this is no, so please explain why. What's the reason? देखो एज अ रिएक्ट डेवलपर मैं बोला ना कि देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर्स विच जो कि कोड को बहुत गंदा कर देते हैं, बहुत ही गंदा करते हैं, लिख तो सब देते हैं, सबका काम भी करता है, बट जब वो कोड देखोगे तो इट इज क्वाइट नेस्टी, बहुत गंदा होता है। एक सेकंड डेवलपर जो दूसरा डेवलपर आता है, अगर उसके पास अच्छा नॉलेज है, वो अच्छा काम कर रहा है, और वो जब कोड देखता है तो उसको रोना आ जाता है कि भैया क्या कर रखा है, क्या गंद मचा रखा है। तो आई थिंक इट इज लिटिल बिट नेस्टी, बट लोग ऐसा करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी अप्रोच है। वो क्या करेंगे, दूसरा डायलॉग बॉक्स बना लेंगे जिससे वो, अब क्या है प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स है, मैंने बोला था रिएक्ट इज समथिंग वेयर वी हैव टू मेक अ रीयूजेबल कंपोनेंट्स, so one component is reused again and again. Something like if you have to use any pages, user dashboard, then you can use at as much as possible places. But yes, if you have a different components, then you can use this component in different part of your project as per your requirement. So problem is that this component is not reusable because you have handled this data, this name, this email, this role, and this password. So this component is only user specific component. ये component सिर्फ user के लिए handle कर पाओगे. Is it this component is not handled for your category, for your what, for your uh, for your different another part of your project. But ठीक है, because this is a user data, तो अभी के लिए हम इस component को ऐसे ही रहने देते हैं. But जहाँ पे हमें लगेगा कि हमें component को reusable बनाना है, तो वहाँ पे हम वो approach follow करेंगे. तो अभी के लिए रहने दो, क्योंकि ये हैंडल है, हम दूसरी कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं स्कोप चेंज करूंगा तो देयर आर लॉट ऑफ वर्क्स व्हिच आई हैव टू डू. ठीक है, ठीक है, बट अभी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्नैक बार यूज करना है. सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस यूज स्नैक बार, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंपोर्ट दिस यूज स्नैक बार. सो जस्ट इंपोर्ट इट. स्नैक बार प्रोवाइडर हमने प्रोवाइड कर रखा है, एंड नाउ इट इज ओके. एंड व्हाट वी हैव दिस यूज स्नैक बार. So where's my code? Code. Okay, yeah, sorry. Okay. CD. Yes. So, yes, inside your use snack bar, this use snack bar, and what we can do here, I have to use inside the use snack bar. Sorry, not use a snack bar. I have to copy the whole code equi snack bar. We have to destruct this equi snack bar from this use snack bar hook. Simply like use this patch. So I'm going to use with close snack bar, and now yes, it is okay. And yes, and now what I'm going to do. mm, this equi snack bar, when you submit this form, then I have to save uh, what. So what we have to do, अब कब मैसेज क्या दिखाओगे बताओ. यहाँ तक तो तुम्हें पता चल गया कि तुमने सबमिट कर दिया है, एंड यू हैव डिस्पैच द रजिस्टर एक्शन क्रिएटर, एंड व्हाट इट मींस, इट कॉल्स वन एपीआई, एंड आई वांट कि व्हेन इट इज सक्सेसफुली created, a user is successfully created, then we have to show a green toast bar message. And if you have some error, then you have to what, you have to display this error message inside your component. Okay, so I'm going to use a use selector hook to get the created data. If it is like
Okay, then a green message, otherwise a red message. So let me check what we can do. We have a Redux, yeah, and now when you not a login, so just give me a second. I'm going to open it inside your here. So let me check. ठीक है. सो मैं क्या करता हूँ कि यूज रजिस्टर जब मैं करता हूँ तो वहां से मैं डेटा गेट कर लूंगा. तो मेरे पास जो रिड्यूसर है वो यूज रजिस्टर रिड्यूसर है. या आप ये भी कर सकते हैं. एक बार देख लेते हैं. लेट मी चेक कि मेरे प्रोजेक्ट में ये यूज कहाँ कहाँ हुआ है. स्टोर यूजर रिड्यूसर में और इंपोर्ट की. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो लेट मी जस्ट add one user from here. So I'm going to test user 2 or test user 2 at the rate gmail.com. Password is 123 123456 and role should be user. When I click on it, just let me check. I'm going to reset my all the things from this here and just click this. Yeah. So user register have user info. So I'm going to get it from this reducer. दिख रहा है ना, ये reducer पे डेटा आ रहा है. और आप क्या यूजर लॉगिन से निकालोगे? नहीं, क्योंकि लॉगिन तो कोई भी हो सकता है. बट जब रजिस्टर होगा तो ये मैसेज आ रहा होगा, यूजर रजिस्टर रिड्यूसर में कुछ डेटा आ रहा होगा. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस hook, sorry, this state. So what we have to do here, going inside my login page and now just copy this data and just going inside my dialog box. और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा गेट करता हूँ, लॉगिन डेटा. और यूज सेलेक्टर आपको गेट करना पड़ेगा. कहाँ से बताइए? यहाँ से, रिएक्ट रिडक्स से. और नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली कॉल दिस कॉन्स्ट. बताओ. नहीं, सेलेक्टर को लाने की कोई जरूरत भी नहीं है. तो ठीक है, नाइस. आई एम गोइंग टू कंसोल दिस, चेंज टू रजिस्टर डेटा state dot user login reducer, not a user login reducer. what बताओ क्या है स्टोर में? देखो स्टोर में क्या है. स्टोर में है तुम्हारा, ओके, इनिशियल स्टेट में हमने दिया है, यहाँ यूजर रजिस्टर रिड्यूसर है. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस यूजर रजिस्टर रिड्यूसर inside my dialog box. State dot user register reducer dot login info. Is it login info? Let me check with store or with our reducer. So यूजर रजिस्टर रिड्यूसर और यहाँ पे यस यूजर इन्फो हो रहा है. लॉगिन इन्फो नहीं है, ये क्या है? यूजर इन्फो है ना भाई? यूजर इन्फो एंड एरर. तो आई एम गोइंग टू यूज दिस. लेट मी चेक विद दिस ओनली. So I am going to console this out. So what I get here, let me check. So this is register data and this is register data. अभी के लिए मुझे लग रहा है कुछ एरर आएगा क्योंकि हमने पीक्वी स्नैप बार यूज नहीं किया. तो I have to comment it out and now I have to comment this line of code as well. And yes, it is okay now. So just refresh my page. And when I add a user, just user 3, एक बार MUI का मुझे ये वार्निंग भी फिक्स करना है. तो देखो वार्निंग का भी आया ना तो घबराना नहीं चाहिए. वार्निंग क्या होता है कि एक बार में आप फिक्स कर सकते हो कभी भी. तो ये जब भी जो भी जितने वार्निंग्स आ रहे हैं ना वो एक दिन बैठ के मैं फिक्स करूंगा और तुम लोग को भी दिखाऊंगा कैसे फिक्स करते हैं. रोलेस यूजर, ठीक है. When I save changes, yes, you have
what this user info है ना, user info जो तुमने ऐड किया है। तो ये मैंने क्यों किया है? why I have done this so I can check is it have a error message। और देखो अगर मैं अब यूज करता हूँ, मैंने कुछ भी डाल दिया, अब मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास एरर मैसेज आ रहा है, आ रहा है ना एरर मैसेज। एक कंसोल में रजिस्टर्ड डेटा में मुझे क्या आ रहा है, देखो रजिस्टर्ड डेटा में क्या आ रहा है, लोडिंग फॉल्स, और एरर में क्या आ रहा है, एक्सियस एरर आ रहा है। और वी हैव दिस मैसेज whole response with this response dot data user is already exist, so you can show this pop-up message here. So what I can do here, I'm just going to import, yes, now it is okay. So yes, I'm going to handle this। अच्छा ये handle कैसे करेंगे? We have to handle this with what? बताओ what I have to do here। I have to handle this with what? I have to handle this with a use effect hook। A use effect hook. Why it is so? Because am I audible? Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So why we are going to handle this with use effect? So I want whenever, देखो अब सिनेरियो समझो सब, कोड मत समझो, कोड तो समझ रहे हो सब और कोड कोई भी लिख लेगा, बट अब सिनेरियो समझो कि कब क्या यूज करना है, what we have to use and what are the best practices which we have to follow। So what I mean, I want something when a user is created, then I want a pop-up message what कि yes, user is created, so any kind of user can see this message, can see this pop-up message on their screen, so he knows that yes, a user is created now। so अब तो ये user perspective से चीजें हो गई। अब सोचो from client perspective what we have to do। so from client perspective basically the thing is that when listen, yeah, so when अब मान लो कि जब रजिस्टर यूजर तुम्हारा कोड, तुम्हारे पास जो कोड है वो कोड कहाँ सेव है, यूजर रजिस्टर रिड्यूसर के पास डेटा है, उसके पास सब कुछ है। मैंने यहाँ कंसोल लगा के दिखाया है ना कि रजिस्टर डेटा क्या है, तुम इस सेलेक्टर से डेटा गेट कर रहे हो, और ये तभी इसमें डेटा आएगा जब तुम इसकी एपीआई को हिट करोगे। इफ यू हिट दिस एपीआई then it gives you some data, either it is an error message or a what, or a whatever data it have। is it clear? Is it clear, guys? Guys, कोई बोलो, कुछ बोलो। Guy, I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm going to handle this EQS snack bar with use effect hook। So I know जब भी इसके अंदर डेटा आए तो मेरा एक फंक्शन कॉल हो जाए। जब भी कोई कंपोनेंट होता है या कोई स्टेट या प्रॉप चेंज होता है, if you have any state or any prop or any variable, and if you want any function has triggered when this variable has been changed। मतलब इनिशियली दिस रजिस्टर डेटा में क्या आ रहा होगा, अनडिफाइंड, कुछ भी नहीं आ रहा होगा। ये डिफाइंड तो है बट इसके अंदर वैल्यू क्या आ रही होगी, अनडिफाइंड, है ना। देखोगे तो आपको दिखेगा क्या, देखो जब फर्स्ट टाइम ये लोड हुआ होगा तो फर्स्ट टाइम इसके अंदर लोडिंग, पहले ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट टाइम इसमें लोडिंग ट्रू हुआ, फिर लोडिंग फॉल्स हुआ, फिर यूजर इन्फो डेटा आया। सो इनिशियली इट हैव नथिंग, so I want whenever it have some data, a one function has been triggered। so what we can do here, for doing this we have to use a use effect hook। so I'm going to import use effect hook from now it is okay, ठीक है। so I'm calling this use effect hook। so here we have to call, so I'm going to call, I'm going to make one comment when register data
when like when data when user sorry when user registered reducer have some data, or the data of user registered reducer the data of user registered reducer has been changed, then this use effect hook should be triggered. Nice. Cool. Okay. So what we can do here, I'm going to call this use effect hook. Use effect hook, and it is a callback function. Inside the use effect hook, you have one callback function. And yes, as in dependency array, we have to pass something. And now what I have to pass? I have to pass this register data, because this register when this register data is changed, then only this use effect has been triggered. So this is called what? A dependency array. If it is empty, then when this component is loaded first time initially, then this use effect has been called. But I want when register data have some data, then only this use effect has been called. So I have passed, और ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि when what are the component did update method, how can you manage the component did update method inside your functional based component. And बहुत तरीके, देखो एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है. There are a lot of ways to ask one question. कभी भी नहीं होता है कि सीधा आपसे पूछेगा what is use effect, what is this, what is that. आपको वो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को ऐसे टेस्ट करेगा कि भैया आपको ऐसी चीजें आपने यूज करा है कि नहीं करा है, आपने ये चीजें सुनी है कि नहीं सुनी है. तो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन इन अ प्रोग्रामिंग वर्ल्ड. नहीं तो कोई भी 50 क्वेश्चन जाएगा और वहां से याद कर लेगा. सिंपल देखो, मैं नहीं चाहता कि यार तुम लोगों को ना बस वही करा के भेज दूं कि भैया तुम लोग जाओ और मुंह उठा के चले आओ और फिर डिप्रेशन के फेज में चले जाओ. मैं चाहता हूँ कि learn in depth so you can manage any kind of interview at any time. जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि भैया ये चीजें ना दिन भर में 50 बार मैंने सुनी है और तुम्हें वहां पे रिग्रेट फील नहीं होगा. अब जैसे हिमांशी ने भी करा होगा, तुम प्रोबेबली जावास्क्रिप्ट में ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो इसके स्कोप के बाहर की चीजें होंगी. यस सर. जो भी होगा उसी के अंदर होगा, और इवन उसके लिए वो इजी लग रहा होगा. मतलब मोस्टली आई प्रोबेबली से दैट कि वो चीजें इसके लिए कि बहुत इजी होगा. बिकॉज सर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी जावास्क्रिप्ट पे बनाए थे तो उसके रिवीजन भी हुआ था, तो इसीलिए मुझे वो इजी लगा. एग्जैक्टली. तो यस, तो बंदे को काम तो करना पड़ेगा भैया. मैं कभी नहीं बोलूंगा कि सीधा जाओगे मैं पढ़ा दूंगा और तुम सबका हो जाएगा. यू हैव टू वर्क विथ योर ओन. आपको करना पड़ेगा, विदाउट किए हुए कुछ नहीं होता है. बट यस, लेकिन चीजों को समझो, टर्मिनोलॉजी को समझो, कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग फ्लो को देखोगे तभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगा. और इंटरव्यू मायनिया अपने दिमाग से निकालना होता है. फर्स्टली एक फ्रेशर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि उसके अंदर एक इंटरव्यू मायनिया होता है कि भैया आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे 1 महीने का समय चाहिए, मैं 1 महीने में फोड़ दूंगा, मैं 2 महीने में फोड़ दूंगा. जस्ट गो विद एंड स्टार्ट. बट यस, इतना करके जाओ कि तुम्हें लगे कि यस यू हैव डन समथिंग. और इंटरव्यूअर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता है तुमसे कि तुम 100% चीजों को बोलो, बट जो बोलो वो जेन्युइन लगे कि हाँ इसने मेहनत करा, इसको पता है. अब कुछ भी नहीं तिल का ताड़ बना दिए, तिल का क्या होता है ना, कुछ भी बोल रहे हैं. यस. तो yes, I'm going to call this use effect hook when register data variable has been is changed. Nice. So I'm going to call this equi snack bar, probably this equi snack bar, and pass this message. Okay. So what I have, I'm going to like we have register data, but inside this register data object, we have the different states, something like loading, user info, and or inside a user info or error message. So what I have to do, I have to destruct these things from here, like loading, not user info and error message. So what I can do here, I'm going to destruct const user info
user info and error messages from this register data object. कर सकते हैं ना ये चीजें, नहीं कर सकते हैं? तो console.log, let me check user info, और यहाँ पे मैं यूजर इन्फो लगा देता हूँ और एक और कंसोल लगाता हूँ, console.log error and this error masks. Nice. ठीक है, so I can do this and now मैं इसको अभी के लिए कमेंट करता हूँ, मुझे ऊपर भी कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया है। हाँ ठीक है, लेट मी चेक this to control messages. I have some user snack bar is defined bus never used. भैया देखो ये स्लेंट इतना प्यारा है ना, बट इतना इरिटेट भी करता है कभी कभी। यार ठीक है, डिफाइन कर दिए हैं तो क्या हो गया, बट ये तुम्हारे कोड को गंदा नहीं होने देगा। देखो अभी दोनों में अनडिफाइंड आ रहा है, दिख रहा है, यूजर इन्फो में भी अनडिफाइंड आ रहा है और एरर में भी अनडिफाइंड हो रहा होगा। तो क्या ये ट्रिगर होगा, क्या ये यूज इफेक्ट ट्रिगर होगा, बताओ होगा? नहीं नहीं, सर। बिकॉज रजिस्टर डेटा भी तुम देखोगे तो वो भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा, यस सर। डेटा भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। एंड नाउ व्हेन यू क्लिक दिस एंड पास सम डेटा test4@gmail.com, टेस्ट 9 दे देते हैं यार, सॉरी यार, test9@gmail.com, पासवर्ड है 12345 रोल इज यूजर। अब लेट मी चेक विद दिस सेव चेंजेस एंड यस यू हैव अ यूजर इन्फो डेटा। एंड अभी भी देखो एरर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, बट यूजर इन्फो में डेटा है। तो मैं एक कंडीशन यहाँ लगा दूंगा कि इफ यूजर इन्फो, अगर आपके पास यूजर इन्फो है, अगर यूजर इन्फो है तो कंसोल, नहीं कंसोल क्या कराना है आपको, क्या कॉल करना है बताओ? इस इक्वी स्नैक बार, इसके लिए मुझे ये इक्वी स्नैक बार को कॉल भी करना पड़ेगा, वो भी करूंगा मैं, इंपोर्ट भी हटाऊंगा। नाइस, नाउ अब आप इसी इक्वी स्नैक बार को यहाँ कॉल कर लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मैं मैसेज करूंगा ओके, एंड आई हैव टू पास यूजर इक्वी स्नैक बार को मैंने कॉल कहाँ किया है, यहाँ कॉल किया है, और इक्वी स्नैक बार में I have to pass some message what user is created successfully, और एक सेकंड में फर्स्ट में मैसेज भेजेंगे यहाँ से हम वेरिएंट, और वेरिएंट में हम भेजेंगे सक्सेस। लेट मी चेक इट वर्क और नॉट, क्योंकि आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बट देखो क्या होता है। तो लेट मी चेक विथ, अच्छा यस, बट वो ग्रीन नहीं आया, ब्लू आया है। तो एड यूजर test9, अब देखना सब, मैं बंद करता हूँ इसको, और test90 @gmail.com and password is 12345 and role is user. Save changes and यहाँ मैसेज दिख रहा है, यूजर इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, दिख रहा है कोई को? गाइस बता दो। यस सर। यस सर। यस, यहाँ पे आपको एक मैसेज दिख गया कि यूजर इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये पॉपअप चला गया, टाइम के बाद चला जाता है, बट ये मेरे को ना इसमें चाहिए सक्सेस और एरर का कलर भी। तो हाउ टू हैंडल सक्सेस एंड एरर विथ इक्वी स्नैक बार, ठीक है, ओके, और ठीक है, ओके, वेरिएंट, कैन आई हैव टू डिफाइन दिस और नॉट, नॉट नीडेड, क्यों होता रहा?
ठीक है, लेट मी चेक। वेरिएंट एरर मुझे कुछ मिला है और आई थिंक इट वर्क्स, कि काम कर जाएगा। और अब मैं इसको पास करूंगा एक वेरिएंट ऑब्जेक्ट के अंदर, और प्रोबेबली ये ऑब्जेक्ट में जाता होगा, तभी ये नहीं मिला है। तो लेट मी कॉपी, और मैं इसको ऑटो ड्यूरेशन हटा देता हूँ, और वेरिएंट जो है हमारा, इसको एरर कर देते हैं। मतलब क्या किया मैंने, देखा है ना, एक मैसेज पास करा, एक ऑब्जेक्ट पास करा है, उसमें वेरिएंट एरर। तो अब मुझे यहाँ पे एरर नहीं देना है, मुझे क्या देना है, वेरिएंट क्या देना है, सक्सेस देना है। और मैं क्या करता हूँ कि अब एक और कंडीशन लगा देते हैं, इफ एरर, तो क्या आ जाए बताओ, यही क्विज स्नैक बार रहे बट विथ एरर मैसेज। तो वेरिएंट क्या भेजोगे यहाँ पे, एरर एरर, और यहाँ क्या मैसेज भेज देते हैं बताओ, समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग। इज इट वर्क, बताओ, करेगा वर्क ये? ठीक है, अब लेट मी चेक विद आवर यूआई। देखो अब ग्रीन हो गया है, दिख रहा है ना? यस सर। और अगर मैं ऐड करता हूँ कोई यूजर विदाउट एनी पेलोड, तो देखो एक मैसेज आएगा, अभी तक नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा कंसोल में एरर अनडिफाइंड है। ठीक है, एरर अनडिफाइंड है, नेटवर्क टैब नहीं हुआ है क्या हिट? सो लेट मी चेक, आई एम गोइंग टू हिट दिस एपीआई। अभी पेंडिंग स्टेट में है, पेंडिंग स्टेट में है, पेंडिंग से कुछ तो एरर दो, कुछ भी एरर दे दो। एरर अनडिफाइंड, अभी एरर आया ही नहीं है, तो लोडिंग हुआ क्योंकि नेटवर्क में तुम्हें कुछ भी मैसेज नहीं कर रहा। तो मेरे को एक बार बैकएंड पे कुछ हैंडल करना पड़ेगा, अपने बैकएंड के टैब पे मैं जाता हूँ। ठीक है, दिस इज और बैकएंड ना? नहीं यार, बैकएंड तो इधर होगा। हाँ, एरर्स तो आया है, बट फ्रंट एंड पे अभी तक आया नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या हमने एरर को भेजा नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बैकएंड से ना एरर को रिस्पॉन्स में भेजा ही नहीं है, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम कर रहा है कि फ्रंट एंड में पेंडिंग स्टेट चला जा रहा है। तो लेट मी चेक, देखो हमने क्या किया है, एरर को कंसोल करा दिया है सिर्फ। हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए बताओ, रिस्पॉन्स सेंड करोगे ना, स्टेटस 400 या 500 और डॉट जेसन, और यहाँ पे आप क्या करोगे, एरर को एरर भेजोगे ना इसे, क्योंकि कंसोल करा रहे हो ना, वहाँ पे कंसोल में तो दिख रहा है बट वो आ नहीं रहा है तुम्हारे फ्रंट एंड पे। अब देखो समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज आ चुका है, नाइस कूल। तो let me check, I'm going to hit again with I'm refreshing my page, and now when I save changes something went wrong। तो इससे यूजर को समझ में आ जाएगा कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है, जिसके कारण हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इज इट ओके? यस सर। अब देखो, जहां तक तो हमने हैंडल कर लिया, मतलब हमने आज क्या कर लिया, हमने एपीआई इंटीग्रेट कर लिया, फर्स्ट एपीआई इंटीग्रेट कर लिया, हमने अपने स्नैक बार को हैंडल करा है, हमने कंपोनेंट पे कुछ कोड भी करे, ठीक है, नाइस, गुड। बट नाउ आई एम गोइंग टू go inside my dialog box, and what I have to do here, okay, so I want कि whenever the data is coming inside your reducer, then okay, so whenever a data is coming inside your user list reducer, then this API, I mean this table has been updated with the required data। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे इसको ऑप्टिमाइज करना है, मतलब मुझे इसको डायनामिक करना है। अभी तक ये है, ये डेटा क्या है, कांस्टेंट है ना, मतलब स्टैटिक डेटा है। दीज आर दी स्टैटिक डेटा, आई एम राइट? Yes, sir. So these are the static data, so I'm going to make it dynamic with what? So what I have to do here? कोई बताओ मुझे, कुछ सजेशन दो कि कैसे डायनामिक बनाया जाए इसको। मतलब पहला काम क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा। डिस्कशन का पार्ट बनो सब यार, जो अभी तक बन नहीं रहे हो ना वो भी डिस्कशन का पार्ट बनो, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। सोचो 2 मिनट से बताओ मुझे। यस, एनी आइडिया कैसे किया जाए हैंडल इसको? एनी आइडिया? No, sir. सर क्वेश्चन क्या था? अच्छा, क्वेश्चन इज दैट कि हाउ कैन वी हैंडल a data inside your table. This is basically a static table, a static data which is rendered on your table. So now I have to ओके, make this dynamic. So what are the ways स्टोर के पास तो so हमारा we डेटा can है ही, सो वहां से लेके आएंगे। स्टोर में कहाँ पे डेटा है? स्टोर के अंदर एक इसमें था ना, क्या कहते हैं इसको? तो देखो, स्टोर में लॉगिन वाले के पास अपना डेटा है, रजिस्टर वाले के पास सिंगल यूजर का डेटा है। हाँ, is any thing which have all the data, all the users data, because you have गेट to एपीआई, ऑल एपीआई करके एक क्रिएट किया था ना हमने, मतलब सबको एक साथ मतलब लेने के लिए एक एपीआई क्रिएट किया था हमने। let me check. देखो, you can't handle your data with Redux if you haven't any API. So firstly, what you have to do, you have to integrate one API to get all the users data, and then you have to save this data inside your what, Redux store. So you can get this data from this Redux store, and so you can map this data inside your component. So probably, is it feasible way to do this thing? Right, Yes, sir. this is the feasible way. Sir, Redux के साथ यूज करके हमको डायनामिक बनाएंगे। Yes, we have to make this dynamic with this Redux, but before making it, how can you save this data inside your store? Firstly, you have to integrate a API. Then only you can get this all the users data inside your store. Yes. So पहला आपका काम ये है कि भैया स्टोर में लाने के लिए आपको API इंटीग्रेट करनी होगी। तो let me check you have an API or not. So I'm going inside my bank profile folder, and you have user controller. You have no any kind of data, any API which have all the users data. ओके Which सर, have वो all प्रोडक्ट the, के लिए बनाया था, इसके लिए नहीं बनाया था। yes, we have a product where we have everything. No, we have get products. Yes, this is the get products which we have used to get all the products. So I'm going to use this what, API. So get all what, users. Copy it. क्या कर सकते हो बताओ? Get all users. ये कोड समझ में आ रहा है? बताओ सबका, नहीं आ रहा तो बता दो, अभी बता दो। सर आ रहा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने यूजर मॉडल के पास, आई एम गोइंग
towards my user model, and now what we have to do, user dot find empty object. मतलब we are not going to give any kind of filter कि भैया इस आईडी को लेके, अगर मेरे को सिंगल आईडी चाहिए होती तो आई हैव पास्ड व्हाट दिस आईडी इनसाइड दिस find method, but we want all the data, so I have passed the empty object, means कि सब कुछ दे दो. And now I'm going to return a response, and now this users inside this, and yeah, it is okay now. What I have to do, I have to export this get all users, right? And now what I can do, I have to make the route, corresponding route. So going inside my user routes, and router dot route, and now what I can pass, get all user, get all users. And because it is a okay, so route dot route आप use करते हो, तो yes, I can use this protect, because protect क्या करेगा, आपके ऑथेंटिकेशन को चेक करेगा. चाहिए होगा ना, क्योंकि आपको पूरे यूजर का डेटा चाहिए, तो आप इसको पब्लिक बना लो या प्रोटेक्टेड बना लो. अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पब्लिक बना दूं या प्रोटेक्टेड बना दूं, बताओ, जो बोलोगे वही करेंगे. प्रोटेक्टेड कर देते हैं. प्रोटेक्टेड कर देते हैं, तो कर देंगे प्रोटेक्टेड. ठीक है. तो गेट ऑल यूजर्स, and now inside your user routes, this get all users, and I have to use this product from import protect from middleware auth middleware.js. So I have to pass this protect, and now what I have to pass, this controller name. So just passing this controller name, now it is okay. So let me check. So yes, it is now done. So what I have to do here, I have to check this on Postman, but basically I have used the Swagger. Doesn't provide export named get all users. Why it is happening? Let me check my user controller. Get all users. Try. ठीक है. Why it is happening? Does not provide an export named get all users. Okay. ऐसा कैसे हो सकता है? Let me check. Yes, I think it is okay now. Yeah. So I'm going to integrate this API inside your front-end application first. Inside your user actions, you have a user register request, register success, failure, login, user logout. And now, first what you have to do, you have to define a constant. Constant define करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा. तो export const, क्या बना दे बताओ, user all users data request, और इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, this. And now export const all users data success, and this is equivalent to this. Now export const all users data, sorry.
all users data failure, and it is equivalent to this. Okay, nice. बहुत बढ़िया. We have created this actions, and now what we have to do, we have to make a function which handles this action. So basically what we can do here, I'm going to make a corresponding yes. previous data open करो. Just please mute कर लो भैया. तो previous page open करो. ठीक है, चलो कोड ओपन कर लेना. हाँ बताओ. उसके पहले इसमें अपने कोड डाले ना. यस. सेकंड वाला सेक्शन जाएगा ना. सॉरी, सेकंड जो लाइन है 12 लाइन में जो लास्ट में है यूजर डेटा रिक्वेस्ट, वहाँ पे सक्सेस आएगा ना. हाँ तो सक्सेस ही तो है. अच्छा, सॉरी रिक्वेस्ट है ना. सॉरी गाइस. ठीक है, नेक्स्ट. तो ठीक है, अब तो मेरा ये हो गया है. अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके करस्पॉन्डिंग क्या बना देता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि इसको क्या करेगा, चेक करेगा. तो ऑल यूजर्स डेटा, ठीक है. तो एक्सपोर्ट कॉन्स ऑल यूजर्स, और मैं इसको एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ. और basically because it is an API, so I'm going to make a sync function, and now I have to dispatch this action. So what I have to do, firstly I have to make what we have a try and catch block, so I can handle with try and catch and try, and then after catch error. And this because it is when you are handling any API or any kind of network request or any kind of database call, then you have to use this try and catch block to catch the specific error which is coming from your network request. Because if it is a normal JavaScript function, then what it means, the error is coming from your local code base. But if you're handling any network type of request, any kind of API, any kind of database call, then this error can't be like only your errors. You have some error which is coming from your network. So how can you manage this error? So if it is coming from network, then it must be handled inside your catch block. So when you are making any asynchronous function, mostly make a try and catch block. बहुत लोग ये practice follow नहीं करते हैं, वो लोग normally call कर देते हैं. But मुझे लगता है कितने बेवकूफ हैं ये लोग, इन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि नेटवर्क के एरर को कैसे मैनेज करोगे. तो ठीक है. So this is a try block, and what I can do here, I have to dispatch an action. तो dispatch करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, import भी तो करना पड़ेगा ना. तो user बताओ, inside the components ये है ना, all user. तो this, then this, then this, right, and all users data request. ठीक है. So what I can do, I have to dispatch this action. So ठीक है, नाइस. अब मुझे डिस्पैच तो कर दिया. अब जब मैं डिस्पैच कर देता हूँ, उसके बाद क्योंकि आपने लोडिंग स्टेट स्टार्ट कर दिया, फिर मुझे क्या सेट करना पड़ेगा बताओ. मुझे इसकी कॉन्फ़िग सेट करनी पड़ेगी. एंड व्हाई इट इज कॉन्फ़िग इज नेसेसरी, बिकॉज यू हैव मेक इट प्रोटेक्टेड. यू हैव मेड इट प्रोटेक्टेड. सो आई डोंट थिंक कि हमने अभी तक बियरर को मैनेज किया है फ्रंट एंड से. नो, आई हैवंट हैंडल द बियरर टोकन. तो ऐसी एक बात बताओ, प्रोटेक्ट जब होता है, तो जब प्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं कोई भी, जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप इसकी राउट्स में जाओगे, तो
तो क्या है, ये प्रोटेक्टेड है। तो जब प्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं? यू हैव टू पास अ टोकन, यू हैव टू पास व्हाट, अ टोकन इनसाइड व्हाट, इनसाइड व्हाट, अ हेडर्स। हेडर में क्या भेजना पड़ता है हमें? टोकन भेजना पड़ता है, तो नहीं भेजना पड़ता है? बताओ किसी को कोई आइडिया है टोकन क्या मैं बोल रहा हूँ, फ्रंट एंड पे क्या भेजना पड़ता है? आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना? तो गिव मी अ सेकंड। यूजर एक्शंस, एक्शंस 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 एक्शंस। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो मैंने कहीं पे हेडर में टोकन तो भेजा होगा ना, क्योंकि ये भी अच्छा मैंने नहीं भेजा होगा ना, बिकॉज दिस आर दी नॉट अ प्रोटेक्टेड राउट्स, अभी तक हमने कोई हैंडल ही नहीं किया। तो आई एम गोइंग टू डिस्पैच फर्स्ट एक्शन एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सेट आर config दिस config। एंड ये config क्या रखता है बताओ? ये config किसका इंफॉर्मेशन रखता है? तुम्हारे हेडर्स का। जब तुम पोस्टमैन पे हिट करते थे तो हेडर में भेजते थे ना एक्सेप्ट कंटेंट टाइप और ऑथराइजेशन, भेजते थे। जब प्रोटेक्टेड कोई भी राउट आप बैकएंड की प्रोटेक्टेड राउट को यूज करते थे, हैंडल करते थे, तो आप क्या भेजते थे? ऑथराइजेशन भेजते थे अपने पोस्टमैन से। आई एम गोइंग टू पास ऑथराइजेशन एंड दिस ऑथराइजेशन इज व्हाट। अब बताओ मुझे क्या भेजना पड़ता था? बियरर और टोकन। बियरर और क्या भेजना पड़ता था? टोकन। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस बियरर एंड देन दिस डॉलर। और डॉलर में क्या भेजते थे हम? बताओ, टोकन। बट आई एम गोइंग टू यूज दिस टोकन। अब ये टोकन हमें लाना भी तो पड़ेगा ना, बिना लाए हम यूज कर सकते हैं? तो अभी के लिए मैं भेज देता हूँ टोकन। अब देखते हैं ये टोकन को कैसे लाना है, फ्रंट एंड से कहाँ से भेजना है। तो मैंने ऑथराइजेशन में डाल दिया, ठीक है, ऑथराइजेशन में मैंने टोकन डाल दिया। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं टोकन ले आ देता हूँ, ठीक है। और कन्फिग को कंसोल, अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है गाइस? यस सर, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्यों मैंने ऑथराइजेशन में टोकन भेजा जो मैं पोस्टमैन में भेजता था। और अब मैं यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस कन्फिग। ये कन्फिग में क्या मिल रहा है? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऑल यूजर्स को कॉल करना पड़ेगा। और मैं अभी इसको ऑल यूजर्स को कहाँ से कॉल करूँ? तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑल यूजर्स को कॉल करना पड़ेगा। सो ओके, नाइस, आई गेट दी व्हाट आई हैव टू डू। चलो ठीक है, ठीक है। अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, अभी मैं पूरी चीजें सेट कर लूँ, फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि कौन से कंसोल पे क्या आ रहा है। तो हमने कॉन्फ़िग सेट कर लिया है ना। अब हमें क्या करना होगा? मुझे डिस्पैच करना पड़ेगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट बनाता हूँ और यही रिक्वेस्ट मैं कॉपी करके यहाँ पे हेडर के बाद यहाँ भेज देता हूँ। और क्योंकि हमारे जो है API स्लैश यूजर्स प्लस स्लैश क्या है, राउट्स में जाके देख लो क्या है, गेट ऑल यूजर्स। तो यूजर एक्शन और ये हमारी API एंड पॉइंट है। और अब मुझे बॉडी में कुछ भेजना नहीं है क्योंकि ये गेट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है। तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा ये बताओ? गेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर देखोगे यूजर आउट में तो ये कौन सा है? गेट ऑल यूजर्स। ओके, राउटर डॉट राउट, इसमें मैंने गेट ही भेजा है ना, ठीक है। राउटर डॉट राउट नहीं भेजना था, मैं राउटर डॉट राउट नहीं, की राउट की जगह मैं गेट भेज देता क्योंकि मैंने, अब मुझे गेट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है ये। तो ठीक है, मैंने गेट कर दिया, कन्फिग भी भेज दिया। और एक बार मुझे कंसोल कराना पड़ेगा इस डेटा को भी, कंसोल डॉट लॉग डेटा। डेटा डेटा, ठीक है। तो अब तो मैंने API लगा दी, अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग क्या बनाना पड़ेगा? रिड्यूसर, है ना। फिर ये एक्शन को डिस्पैच करना पड़ेगा। तो आई थिंक फॉर टुडे बेसिकली आई एम गोइंग टू रैप अप दिस कॉल बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क। और थोड़ा ही टाइम बचा है 10 बजने में, तो यस
तो ठीक है, तो कल इसको मैं कल कंटिन्यू करते हैं, कल अपने स्पेसिफिक जो भी हमारा टाइम है उसी पे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और आई विल ट्राई, अच्छा 7 बजे कल क्लास में स्टार्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। तो 7 ही बजे स्टार्ट करते हैं ना, ओके। क्योंकि थोड़ा पहले ही इसको रैप अप कर लेंगे। तो ठीक है गाइस, सो आई थिंक अभी तक जो है वो समझ में तो आया होगा ना कि अभी हमने क्या किया। हमने गेट ऑन यूजर के लिए एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर इसको कॉल करेंगे, फिर अपने अपने टेबल को डायनामिक बनाएंगे। इज इट क्लियर? है ना? ठीक है, तो कल ही अटेंडेंस लूंगा इस चीज का, और तो आज रैप अप करते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट। निखिल,
अरे लेक्चर हो गया या बाकी है अभी? हेलो। अमन।